everybody. We are back reconnecting, and I think we have reconnected back. Okay, people are back here again. Thank you so much. I hope everybody is safe, and I hope everybody is staying in. I hope everybody is safe in Kolkata and West Bengal and parts of Odisha, Bangladesh. Terrible cyclone and huge devastation from what I've been hearing. But I just hope everybody's safe and they are okay. So I just clicked him again. Sherry, ki haal hai bhai tera? Yes. There you are, sir. I see you. I hear you. Hi, In Milind. live flesh and blood. Yeah, great. Ladies and gentlemen, may I present to you. Oh, Neil, this is the first time you're also doing this. Oh, so the first time for a lot of people on this show. Okay. Yeah. So, everybody, please welcome Mr. Ravina Ashok, a very senior engineer of the Indian music industry. Hi, Neil. Sorry, sir, क्या कह रहे हैं? मैं नील को हेलो बोला था मैंने. अच्छा, नील को हेलो बोला. सर, आपको बहुत सारे आपके पुराने मित्र मिलेंगे यहाँ पे. हाँ, ये मिलिंद था, yes. और बोलिए. हर्ष भी है. Okay, Avinash ji, let's quickly dive into your FTI coming out in what 1973 or 74. सब कब निकले आप? 73. 73. You got out of FTI and straight dived into work. Absolutely. तो क्या काम किया? Initially with Rajkamal Studios for a couple of days because I was supposed to join them, so I joined them. लेकिन वो कुछ बात जमी नहीं बाद में about मतलब फाइनेंशियली कुछ वो फिट नहीं हुआ मेरे लिए, तो मैंने फिर वहां से छोड़ दिया. बट बट दैट टाइम राजकमल में तो मंगेश देसाई जी काम करते थे ना? यस, मंगेश देसाई थे. हमारे कुलदीप सूद थे, मिस्टर सूद, कुलदीप सूद जो मतलब यहाँ पे देवानंद साहब के पास उनके आरआर में थे, तो ही वाज देयर आल्सो. एंड एक्चुअली काम शुरू करना था वहां पे, लेकिन नहीं हुआ. आई मीन विच वाज wrong for me not to accept whatever they offered me. But you wanted to do film film mixing work. That's what you joined them Rajkamal for. You wanted to actually do film work, recording work. Yeah. Actually, at the end of the second year term, we are supposed to have 1 or 2 months of internship in any of the studios which we want. But actually, I was writing a paper. We have to write a thesis also for our completion of the graduation. So I chose intentionally, of course, re-recording systems in Bombay industry. And for that, I had the access to Bombay Sound Services and Rajkamal. I saw all the system completely. I put the block diagrams also for them also. They said, okay, आप हमारे लिए भी ये कर दो. तो वो भी सब रेडी किया था. तो मुझे मालूम था कि वहाँ पे क्या है और कैसे करना है. Most important, actually, I loved that RR thing, which I saw there, and especially Mangesh Desai and how all the film people are coming in, and it's a final thing which we are watching. The final sound also we are hearing. So it impressed me a lot, and I thought that this is what I should do. And I requested them at the end of that term that I'll apply and please, take me that time. So Mangesh said yes, and at the end of the thing, I went there, but it never worked out. Okay. So that was happened. So immediately cut to straight to Western Outdoor, or what? There was something. No. 1 year I was doing live sound on live means Singh sound on. Singh sound मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि Singh sound रहता ही नहीं था तब. It was all dubbing. So whole industry was dubbing that time. So I joined a production VIP International, Vishal International Productions. So that was Manoj Kumar. His film was the Roti Kapda Aur Makan. So I did the whole shooting and dubbing and all that, and effects recording and everything. I did as an assistant to Mr. Venkat करके sound engineer थे, तो उनके साथ.
But मैंने सर आप मेरे को याद है we had one conversation some time back. I mean when we were recording together that you also mentioned Amol Palekar's film जिसमें जयदेव जी को national award मिला था. You worked on that film also. Yeah. I mean that is in Western Outdoor. That is in Western Outdoor. Yeah. But you worked on a film soundtrack like a film recordist, even though you were part of a music recording studio. No, in fact, that's what I'm saying. I was not a part of music recording studio. I never joined Western Outdoor till then. Oh, okay. 73 to 74, I worked only with Vishal International Productions and Nauketan International Devanans. That was Ishq 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 karke picture tha. So I assisted Arunoday Sharma on that. So that was the two things which I was doing parallelly. Oh, okay. But 1 year I got bored on because there is no Singh sound. It was just like dubbing, it is just like going there and put one mic and just record and gossip and have tea, coffee. So you had a different notion in your head about how film sound would be, and when you actually went there, you realized that it's not really the same what you wanted. That's what happened? Absolutely. I mean, it was really a boring work, I thought, at that point of time. Now, I would say that when we are having sync sound, really sync sound, then, it is something, I mean, we have to do something serious. Right. That was like, just putting one mic somewhere and just record and that's it. It is terrible. No, actually, KJG, I'm not a music man. And you know that. I never wanted to do music recording and I ended up doing the maximum music work in my life, which is how can I'm trying to understand that. How can you say that you are not a music man? Look at the body of your work, right from all the Yash Chopra films to Jatin Lalit work to Uttam Singh ji's work, Sir Jagjit Singh's work. I mean, Music Today. The entire catalog of Music Today under Asha Rani Mathur ji was handled by your studio. Sir, itna iconic kaam aapke yahan hua hai, and which is all to do with all classics, what I would call of the Indian music industry. So how can you say कि मैं म्यूजिक का आदमी नहीं हूँ? तो मतलब नहीं म्यूजिक का आदमी नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने के लिए एक म्यूजिक की थोड़ी फार जैसे हम कहते हैं कि वो ट्रेनिंग या थोड़ा सा कुछ सही ट्रेनिंग होना चाहिए म्यूजिक में जो बहुत ही नेसेसरी है अभी तो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट डूइंग सॉर्ट ऑफ म्यूजिक arrangements only you can say arrangement and editing while you're mixing but those times there was no editing and actually we were capturing the performance of the musicians all of them and that is the part of miking techniques and having the best of the sound of the instrument or the vocalist and that's what I was doing but I would say that actually I was not really aware that what great things those people are doing musically. I just enjoyed the music, but actually I was not really relishing that. Maybe you can say, but slowly I started appreciating, really appreciating, and and I mean finally then everybody used to say, "अरे आप बोलते हैं आपको music का ये नहीं, लेकिन आप बहुत ये वगैरह." But that is a part of. I mean इतने 20-25 साल तुम करते जाओ तो इतना तो आना ही चाहिए कोई पत्थर को भी आ जाएगा तो I wanted to share something connected with that which happened when we were recording together during Machis I remember और मैं सबसे ये share करना चाहता हूँ कि I remember we were doing a rhythm work and there was a drum machine there and Bharat Goshar was programming it and then you said okay let's transfer to tape and while we were transferring to tape he played out his kick drum. And I remember very clearly, जैसे ही the moment it played, you said, "KJ जी ये किकेश्वर काम नहीं करेगा." And I'm like, "What? किकेश्वर काम नहीं करेगा मतलब?" बोला नहीं, the way this sound is, it's not going to translate outside nicely. I'm telling you right now. So either you please change the kick drum sound, or you allow me to EQ or do something to it. So if I go by that, remembering that, then. There has to be some kind of a musical tonality in your ear and head for you to be able to say that. कि इतनी confidence है
कि ये तो काम नहीं करेगा, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली इट्स गोइंग ऑन अ कैसेट एंड इट्स गोइंग ऑन अ या सीडी तो थे नहीं, कैसेट ही थे, तो आपको पहले से ही मालूम था, एक्सपीरियंस है कि मतलब ये वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो वो एक सोनिक क्लैरिटी आपके माइंड में थी, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली यू सेइंग दैट, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट। Again, it shows, KJG, ki I was in the tonalities of the instruments and the vocalist and all, you know. I was not really in the music part of it. मैं म्यूजिक का जो ग्रामर है वो मुझे नहीं मालूम था, इनफैक्ट अभी भी नहीं है। सो आई मीन इट्स लाइक मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई एक्चुअली आप लोग सब जानकार हो। मेरे यहाँ पे वेस्टर्न ऑर्डर में पूरा का पूरी गंगा बह रही थी म्यूजिक की, और मैं उसके किनारे पे था और मैं सब चीज देख रहा था, मैं उसको मतलब उसके साथ में चल रहा था, लेकिन एक्चुअली उसमें म्यूजिकली हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से डूबा नहीं, लेकिन उसके कंटेंट के, उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से बोलेंगे या उसके भाव या इमोशन के हिसाब से बोलेंगे तो आई वाज रियली इन इट। आई मीन आई रियली एंजॉयड एवरी म्यूजिक ऑफ दैट। All of you at Western Outdoor. I mean, Damanji, of course, you, and I wanted to share one small incident of Subhashji, who was a tape operator at that point of time. And there were so many moments, a lot of music directors, arrangers, a lot of time जब take चल रहा होता था, तो जैसे ही take खत्म होता है, everybody would turn towards Subhashji on the left side and have a look कि was it okay or not. And Subhashji would, very quietly shake his head and walk away, और say हाँ ठीक है आगे। So what I meant was कि each one of you who's working in that studio had some kind of experience, of course, and also this knowledge of the music that you are recording. किसी को हर एक को थोड़ी बहुत खबर थी, and together that team is what made the sound of Western Outdoor together, I feel. Yeah, actually, and you know what I'm saying is कि we were in it. जिसको हम कहते हैं ना निटी ग्रिटी जो देखने का है उसका, वो हम देखते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब एक गजल रिकॉर्डिंग चल रही थी भूपी जी की, तो भूपी जी ने पूरा रिकॉर्डिंग किया, तो हमारा ये था कि हम वो एनालॉग टेप रिकॉर्डर, आपको मालूम है उसके जो हमारी पूरी की वो शीट होती थी कि मुखड़ा कहाँ पे स्टार्ट होता है, म्यूजिक कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये अंतरा कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हमारा अंतरा जो है, अंतरे का वर्ड भी हम लिखते थे कि ये है, तो मैंने लिख दिया था, और मैं असिस्ट कर रहा था, दमन जी मिक्सर पे थे, तो मैं लिख रहा था वहां पे, और मैंने लिखा भी। और जब टेक करने गए तो भूपी जी ने वो अंतरा गाया नहीं, दूसरा अंतरा गाया, और पहला अंतरा बाद में गया। तो टेक खत्म होने के बाद दमन जी ने पूछा, अविनाश बराबर? मैंने कहा बराबर है, लेकिन भूपी जी ने अंतरा चेंज किया है, तो वेदर इट इज ओके, बिकॉज आई न्यू दैट सिंस अर्लियर डेज कि वो लोग कहते थे कि भाई जब म्यूजिक में कुछ बजता है तो वो आगे में जब जो अंतर आने वाला है उसके बारे में कुछ सोच के वो म्यूजिक बनाते हैं। तो मैंने कहा भूपी जी ने जो म्यूजिक के बाद में जो अंतर गाया वो नहीं गाया है, वो उन्होंने बाद वाला गाया था और बाद वाला पहले गाया। तो मैंने कहा वो पूछ लीजिए। तो दमन बोला, अरे यार कमाल, अच्छा तुमने ये नोटिस किया, वेरी गुड। तो उन्होंने पूछा उनको, तो भूपी जी बोले, अबे साले तुम तो इतना साला ध्यान देते हो, तो साला क्या करेंगे, that is our job. So I don't think now that kind of fun people are having, because the things are already clear with them. The lyrics are there, the things are there, or maybe lyrics are not there. they actually do it afterwards or whatever. Avinash, were you at a time there in Western Order where dubbing had already started, like dubbing of tracks had already started, or you were still recording everything live almost? No, when I went there, it was all live. It was already live. Then because we were having only 2-track recording, Ferrograph, series 7. So 2 tracks, 1 track there was vocals and 1 track all music. That's what we used to record. Okay. And multi-track come in by Peli machine. Multi-track, then we have the 1/4 inch 4-track. So 4-track में हमने काफी गजल वजल करना शुरू करे। बाद में 1/2 इंच 8-track आया, जिसके ऊपर हमने लेकिन वगैरह किया था। लेकिन करके पिक्चर थी, और एक मैं नाम भूल रहा हूँ। तो 2-4 फिल्म हमने 1/2 इंच 8-track के भी की। उसके बाद में वी वेंट इनटू डिजिटल, दैट इज एडम। I was there when the ADAM was first inaugurated. मैं उस दिन वहाँ पे था, 1 अक्टूबर को। That's right. Album सबने 1 अक्टूबर, ADAM उस दिन आया था आपके यहाँ, तो पूजा वजह याद है। Correct. Yeah. But sir, tell me that what was the story about Qurbani? I mean, Qurbani के time
you had to actually change certain things to get some stereo recording in, और वो क्या हुआ था उस टाइम कुर्बानी के नो स्टीरियो रिकॉर्डिंग तो हम करते ही जा रहे थे बिकॉज बाबला जी जो थे वो हमारे यहाँ पे एल्बम करते थे यस्टरडे वंस मोर करके इट वाज इंस्ट्रूमेंटल्स ऑफ द पुराने सॉन्ग्स के तो हम वो एल्बम्स किए 2-3 उनके साथ में तो दैट वाज ऑल स्टीरियो यू नो रियल रिकॉर्डिंग स्टीरियो ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि फिरोज खान एंड कल्याण जी आनंद जी भाई जो थे उन्होंने ये पूछा कि भाई स्टीरियो करना है तो कैसे करें क्योंकि बिद्दू ने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए जो सॉन्ग था वो उन्होंने लंदन में किया था वो स्टीरियो था तो फिरोज जी इंसिस्टेड कि अरे ये तो स्टीरियो होना चाहिए अपने यहाँ पे कुछ नहीं होता क्या तो उन्होंने बोला अपना नहीं होता है तो बाबा जी ने बोला अपने होता है एक वेस्टर्न ऑर्डर करके स्टूडियो वहां पे कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो तो नॉन फिल्म स्टूडियो है यू नो आई मीन देयर वाज लाइक अ डिफरेंशिएशन जिसमें स्प्रॉकेटेड मशीन नहीं है वो नॉन फिल्म है दैट मीन्स नो सिंग तो नो सिंग सो बाबला जी ने उनको बोला वो तो फिल्म का भी करते हैं मराठी और गुजराती और हरियाणवी तो बोले ये आप देखो उनके यहाँ कर सकते हैं तो देन दे केम इन दे बट वी वर हैविंग ओनली 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग बट आप लोगों ने कुछ जुगाड़ किया था उस टाइम फिल्म का काम खींचने के लिए आप सब जुगाड़ आई रिमेंबर दैट Yeah, I mean, actually, we used to record the song, film mix completely quarter inch, and then carry that quarter inch tape and tape recorder to राजश्री जो प्रोडक्शन है उनका एक ट्रांसफर रूम था तो उसमें बाबा थे बाबा का नाम मैं भूल रहा हूँ तो वहां पे जाके हम मशीन लेके जाते हैं मैं और दमन जी खुद मशीन उठा के लेके जाते थे वहां पे और उसमें ट्रांसफर मारते थे और वो 35 mm पे मैक पे ट्रांसफर करते थे और फिर हम प्रोड्यूसर को बोलते थे अभी आपका मास्टर ये है और क्वार्टर इंच आप भूल जाओ ये हम अपने पास रख देते थे यू नो लाइक दैट वाज द थिंग सो देन दैट यूज्ड टू बी मास्टर सो ये हमने किया था तो उनको मालूम था कि ये लोग करते हैं फिल्म का काम अच्छा जो इन्होंने नहीं किया वो हमेशा प्रॉब्लम हुआ जैसे कि HMV का स्टूडियो था बड़ा वहां पे अपने नया स्टूडियो हुआ था उनका तो वो नए स्टूडियो में हमारे यश जी ने वहां पे फिल्म का काम किया था सिलसिले और मल्टी ट्रैक पे किया उन्होंने और मल्टी ट्रैक से वो ट्रांसफर करके लेके के पता नहीं कैसे एक्चुअली नागरा पे करना चाहिए कुछ जो भी है बट वो पूरा का पूरा शूटिंग हुआ उन्होंने वहां पे किया अपने हॉलैंड में और वो पूरा का पूरा आउट ऑफ सिंह गया एंड इट वाज अ टेरिबल थिंग और तब से लोग क्या करते सोचते थे कि नहीं ये फिल्म का काम करना है तो फिल्म को रिकॉर्ड चाहिए स्प्रॉकेटेड so that was the thing that why they never insisted on it. But then finally they did and it was I mean बाबला जी ने वो रोटो टॉम बजाया था तो हमने 3 माइक दिए एक सेंटर एक लेफ्ट एक राइट पैन किए और वो पूरा का पूरा ऐसा वो जो पिकअप घूमता था तो एकदम से परेशान हो गए अरे वाह क्या बात है स्टीरियो है यू नो अभी वो जो सुनते हैं तो I mean, it sounds childish, but actually that time it was novelty. When stereo first came out in the world, they were drums on the left and bass guitar on the right. So we've gone through that as well. Yeah. This one is pretty much right. ये उसका आगे वाला चीज थी समझ लो. एक और चीज which I wanted to share with everybody was कि Western Outdoor Studio में whenever one was working, you know, you started a shift at say 10 o'clock or normally 10:30, whatever. And, you know, you normally work till 5-6 o'clock, but kabhi extend bhi ho jata tha, kai baar. Yeah. But the beauty of the system was ki at any given point of time, between Damanji and you would switch so smoothly कि आप काम करते करते आपको पता ही नहीं लगा कि कब आप या दमन जी चले गए और दूसरे इंजीनियर आ गए आप लोग पता नहीं क्या इशारे में कैसे बात करते थे दिस इज समथिंग आई हैव नेवर बीन एबल टू फिगर आउट बट इट्स स्टक इन माय हेड कि ये होता था कि आप इतनी क्वाइटली स्मूथली मतलब अभी 2 मिनट पहले दमन जी खड़े हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ एंड देन आई एम डूइंग समथिंग एंड आई टर्न एंड ही इज नॉट देयर बट यू आर देयर एंड यू आर कंटिन्यूइंग एज इफ यू नो यू बीन देयर सिंस मॉर्निंग तो हाउ डिड यू मैनेज दिस स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन इंजीनियर्स विदाउट द क्लाइंट नोइंग यू नो एक्चुअली ये है कि दमन जी गुरु है हमारे तो उनके साथ में सीखा हुआ है सब तो वो जैसा करते थे सेम लाइन पे मैं करता था उसके बाद में भी जो लोग आए वो भी सब सेम लाइन पे करते थे तो यू नो लाइक वी आर हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ सेटिंग इन आवर हेड कैसे करना है क्या करना है
आई एम 100% श्योर दैट जब भी वो करते होंगे या मैं करता हूँगा, बाद में दूसरे दिन वो ट्रैक सुनेंगे तो उनको मालूम है मैं भी ऐसी किया रहता, मैं रहता था यहाँ पे, तो इस हिसाब से। एंड इसीलिए जितने सारे सॉन्ग्स हमने मिक्स किए, बहुत सारे, उसमें से 50% ऑफ देम वेर मिक्स्ड विदाउट एनी EQ in final mix, because we were EQing and compressing while taking only, and we had this particular ISA 131 Focusrite. Focusrite. We used to record through that, and the settings and all that were almost identical, even of what we are doing, actually. And we know that to set it right, any compressor is not a child's play. I mean, we have to know the things what are going there, and then accordingly, especially the input level, the drive level. Right. So we were right in that. I mean, we knew what we are doing. So because you had less hardware, you are limited with the hardware. So you actually decided कि input में ही ले लिया जाए, क्योंकि mix के time पे इतने सारे मिलने नहीं वाले. नहीं करेंगे. The approach was to do that. Yeah. Even जब हम स्टीरियो मिक्स करते थे, जैसे स्टीरियो जैसे वायलिन्स है या इंडियन परकशन है, वो पूरा का पूरा 4, 5, 6 माइक जितने भी लगाएंगे उसको पूरा का पूरा 2 ट्रैक में लेके ही हम 2 ट्रैक रिकॉर्ड करते थे। तो वो 2 ट्रैक पे हम स्टीरियो कंप्रेसर लगाते थे। स्पेशली मुझे भी लगता है कि ऑप्टो कंप्रेसर था 747 एवलॉन डिजाइन, so that used to put there, and that too also we adjust properly, and then stereo link on करके we used to do that. अभी आजकल के जमाने में तो लोगों को मालूम नहीं what is stereo link, and because stereo track है उसमें आप compressor डाल देते हो, अपने आप stereo हो जाता है. So it's like. But Avinash ji, I mean, now what you're telling me is कि you made the equalization and the compressor settings while taking, which is such an unheard of thing right now. But you were doing that. But how were you planning? Because you were hearing instruments maybe 2, 3 at a time. फिर बाद में डब हो रहा है, तो आप पहले ही कैसे सोच के रख लेते थे कि अगर मैं EQ इसका ऐसे करूंगा तो दूसरे वाले का ठीक हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल होता था? मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंटेशन का अपने को एक आइडिया था कि ये इसका इस टाइप के टोन आना चाहिए. And we were lucky that we were not having very odd kind of arrangements of music. Unless you come with I mean your own recordings of Kandisa and all that, totally different kind of people and different kind of things. But otherwise फिल्मी जो हमारा बॉलीवुड था उसका जनरली अरेंजमेंट्स मालूम था कि ये ऐसे ऐसे टूटी आएंगे, ऐसे ऐसे वायलिन आएंगे, ऐसे ऐसे ब्रास आएंगे, लाइक इंडियन परकशन, वेस्टर्न ड्रम्स का क्या होना चाहिए, सो दैट वाज क्वाइट ओके. But so we used to EQ and compress at the same time, so that finally really the mix was not much of EQ, or maybe so many times not any EQ. Wow. Okay. And also another quick question was, a lot of the recordings which used to happen on mag film earlier, मैं अभी जो recording सुनता हूँ, the ones which happened all on 35 mag films, most of them do not have a very clear definition of the bass guitar particularly, और क्या use भी कम होता था, but जब भी होता था the low end was not very well defined. But the Western Outdoor recordings, all the ones that I've heard of the film scores particularly, the bass is very well defined, rounded, nice and warm where it should be. So what did you people do to that part, address that part of the frequency spectrum particularly? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम इनफैक्ट ज्यादा ये करते नहीं थे. जो बेस गिटार हम इनपुट डायरेक्ट लेते थे DI में, DI हमारे पास काफी हाई एंड DI थे, तो वो DI से कौन सा यूज कर रहे थे उस टाइम? कंट्रीमैन. हाँ, सो वो उसमें जाता था बेस गिटार, एंड दैट यूज्ड टू गो इनटू ISA 131 because bass guitar was dubbed all the time. I mean, it was not like recorded with anybody else. So we had ISA 131 free. तो उसके थ्रू जाके कंप्रेस करके उसमें मतलब फाइनल आउटपुट आएगा. तो इट वाज most importantly, all other things are already recorded, so we can actually knew कि हाँ ये अभी बेस गिटार ऐसे होना चाहिए, क्योंकि बेस करीबन बात नहीं होता था. लाइक डोमिनिक वगैरह या वाज अपने वो आते थे. ओके. तो
Avinash ji, so the huge ride which Western Outdoor had came to a halt at some point for whatever reasons, and I'm sure that must have been a huge traumatic moment for all of you when that did happen. So what was going on in your mind when that happened, when they used to shut it down? या एक्चुअली हम सोच रहे थे कि ये बंद होता है तो अभी दूसरा कोई स्टूडियो ज्वाइन करते हैं. एक बात सही थी कि हमने कभी ये सोचा नहीं कि हम अपना स्टूडियो बनाए. ये डेफिनेट था क्योंकि दमन जी हो या मैं वी वर नॉट ऑफ दैट काइंड लाइक एक बिजनेस वो भी देखे हैं. और या सो एक्चुअली हमने ये सोचा कि देखते जो भी ऑफर आएगा जैसे देखेंगे. ऑफर तो वैसे कोई आया नहीं स्पेशली. सिर्फ एम्पायर स्टूडियो नाडियाड वाला उन्होंने मुझे ऑफर किया था, लेकिन so many people suggested me not to join. I don't know. It was not that you guys didn't know digital or that, because I remember before shutting down, you had already transited to digital. SEDI system आप लोग use कर रहे थे. आपके पास X86 था, which you were recording the 2-track digital. So you guys were already transited to digital recording. SEDI तो बहुत पहले से था. 1980 में ही 89 में आ गया होगा हमारे यहाँ. मुझे लगता है क्योंकि वी वर एडिटिंग ऑल द ट्रैक्स ऑफ द फिल्म्स ऑन दैट वी यूज्ड टू अलाइन देम, जिसको मास्टरिंग बोलते थे हम. वो 2-track जो मशीन था उसपे से मित्सुबिशी X86 से हम उसको डायरेक्ट D2D ट्रांसफर करते थे सेडी में, और उसको एडिट करके अरेंजमेंट करके गैप्स करके वगैरह वगैरह पूरा मास्टर बनाते थे. उसको डैट में ट्रांसफर करते थे. एवरीथिंग वाज D2D, बट दैट वाज टेप बेस्ड थिंग इनिशियली. And SEDI was hard disk based, but जो रियल मल्टी ट्रैक जो करना चाहिए वो था प्रो टूल्स या वैसे, जो हमने काफी लेट लिया. इट वाज आई थिंक 2001 एंड था कि हमने प्रो टूल लिया. मल्टी ट्रैक. हाँ प्रो टूल्स एक्चुअली प्रो टूल्स लिया. एंड देन दैट वाज and that we wanted to lock in with 2-inch 24-track because that was our de facto standard machine. And that's why we had to add the synchronizer for that, and it costed us about 27 lakh rupees, total package of HD3. Adam Smith wala liya tha aapne. Yeah. Adam Smith and that was actually पूरा ये सब करके Pro Tool जो उसके ऊपर जिस धड़ल्ले से काम हो जाना चाहिए वैसे नहीं हुआ, क्योंकि वी वर अंडरस्टैंडिंग इट, वी वर लर्निंग इट. अच्छा हुआ कि आदित्य मोदी था, वो हमारे यहाँ पे उस टाइम में जिसको हम कहेंगे इंटर्नशिप करते थे समझो. सो ही वाज देयर एंड ही न्यू द होल थिंग. सो एक्चुअली ही टुक द डिलीवरी ऑफ द प्रो टूल्स एंड he initially taught us. वो हमारे गुरु है उसमें. Okay. So that was a part of it, but it was so late, 2002 was very close. 2002 we closed down. 2002 we closed down. Yeah, before but you that, had some of the best equipment at that when you closed down. Western Auto closed down. Yeah. You had some of the best high-end audio analog equipment that was possible in terms of microphones, the mic bridge. You had a Hendrix, Hendrix console. You had a 2-inch 24-track Studer with Dolby. As if I remember, you had a Mitsubishi X86 2-track. You had a CD system. You had a Pro Tools. So, even cassette deck, we had Nakamichi cassette deck, and and most importantly, the effects, the Eventide H4000. 2290. Very high. But what happened is that that equipment, actually we don't know what happened, because UTV they took charge of that, and they took the whole equipment somewhere, and we were not having any chance. I told Ronnie Screwwala at that point of time, tell us whenever you are going to take out that equipment, because he said we are taking inventory, we are having there was a lot of things happening. So I said whenever you are disposing of, so
once I called him, he said that we are not disclosing of, we are having a studio in Worli, so we are trying to go there. Okay. तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन और बाद में हमारा 2-24 track and H 4000 Eventide and all that, they ended up in Studio Divine in so that was even our piano was bought by Lalit ji. So Lalit ji के घर में हमारा piano है, piano. Yeah, I remember seeing it at his place. I saw it at his place and I just turned and said, "ये तो Western Outdoor का piano है." iconic piano है. So many people have sat there and composed on that piano and played it in their tracks, that piano. And especially Bhatia. Yeah, bilkul sir. So sir, so now the whole career shift has happened to you from a person who wanted to do re-recording and transiting into one of the topmost coveted studio which does music. So that's a huge jump for you already there. And once that shuts down, and there's now another turn in your career where you now an educator. So how did that come about? Yeah, actually, educator I am since 1994. Oh. So, actually 1994 was the start of Mumbai University sound engineering course, which was a short. Kunde. So he approached us and in Western Outdoor, and he asked Damanji and me कि आप कुछ ये लेने के लिए आ जाओ, तो दमन जी तो मना कर दिए. अभी मैं उनके साथ में था, वो मेरे सीनियर थे, तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करूंगा, देखता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डिफिकल्ट है, काम बहुत है. 94 वाज लाइक वी वर नी डीप इनटू दैट. तो कहने लगे नहीं यार, तुम घर में जाते हो तो जाते जाते कैसे जाते हो? तो मैंने कहा तो ट्रेन में जाता हूँ, तो हमेशा ट्रेन में ही जाते हैं. तो बोला आप ट्रेन चर्चगेट में आ जाओ, वहां से उतर के बस बी रोड पे हमारा स्टूडियो है, वहां पे क्लास हुआ, 2 घंटे क्लास लेके आप निकल जाओ, वो भी हफ्ते में 2 बार ही करना है. मैंने हाँ बोल दिया. बट आई एम सेइंग दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम 94 टू 2003, 9-10 साल में सिखा रहा था, और वहां पे सिखाया तो फिर मैं और भी कहीं कहीं जाने लगा, ATI में जाने लगा, और तो दैट रियली हेल्प मी टू रियली कीप मी बिजी. आई मीन पोस्ट वेस्टर्न आउटडोर, I was I'm in this academics, and I'm really enjoying it. Right now also, just I saw Milind coming in, Raurani. He was one of the first or second batch of Mumbai University sound recording course, so I still know him. So students are here. Yes. So Avinash, I have a two-pronged thing here. When you said that you've been doing education since 94 and then further on after that when Western Auto shut down. So a lot of kids come up to me and their parents come up to me so many years now and want to know, is a sound engineering education important for their child? Will they say, everybody wants to know, usko kaam mil jayega, wo apne पैरों पे खड़ा हो जाएगा. Is it a safe industry that you can get job? ऐसा तो नहीं है कि वो इतना पैसा हम लगा दे और ना मिले. So they keep asking me that, and I think you are the right person to answer that, because since you teach and you are talking to so many kids every day, what do you feel, is a sound engineering education important for a kid nowadays, and will they be able to find their feet once they've done that? That's they have to be focused. They have to decide that I have to do this, and then only they will be able to do it. मैंने 60 to 70% बच्चे देखे हुए हैं कि वो दूसरा कुछ कर रहे हैं, कोई तो कॉमर्स कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, एंड देन फिर मैं बीच में 1 साल का या कुछ ये कर लेता हूँ और कर लेता हूँ. हाँ, हमारा ये म्यूजिक, मेरा बच्चा जो है ये म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, इसको कुछ जरा ये साउंड रिकॉर्डिंग सिखा देना है. तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, पहले आप उसको बच्चे को भेजो, उसको देखते हैं, उसको रियली इंटरेस्ट है, उसको रियली करना है, तो काम है, सबके लिए काम है. और मैं ये कहता हूँ कि उस हिसाब से, जिस हिसाब से स्पेशलिटी ट्रेनिंग अपनी होती है साउंड इंजीनियरिंग की, उस हिसाब से हमारे जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर है, वो बहुत कम है, बहुत अच्छा है बाकी कोई भी दूसरे फील्ड के हिसाब से.
दूसरे फील्ड में आपको आईटी में जाना है, आपको कुछ करना है, 4 साल आपको उसमें डालने पड़ते हैं, आपको इंजीनियरिंग में भी काफी 4-5 लाख रुपया डालना पड़ता है। राइट। ये सब करने के बाद आप जब बाहर आते हैं तो मुझे मालूम है, मेरा बच्चा भी पास हुआ है आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो जब पहले पास हुआ था तो इन्फोसिस ज्वाइन किया, तो उसको जो जो फर्स्ट पे मिला, जो हाँ। पगार पेमेंट है वो 14,000 रुपीज था, एंड दैट इज स्टिल वैलिड। आई मीन एवरीवेयर इट इज समथिंग लाइक दैट। अभी लोग हमें पूछते हैं अरे वो वहां से जाने, मैंने कहा इधर से जाने का कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन इट विल ऑल डिपेंड ऑन ऑन योर चाइल्ड, व्हाट ही विल डू। दिस इज लाइक, हम स्कोप कितना बढ़ा सकते हैं, जितना हम खुद स्कोप करेंगे उतना करेंगे तो उतना ही। एक्चुअली। लेकिन इतना ही है कि इसको पार्ट टाइम जॉब मत करो, इसको आप फुल टाइम करो। मैं हर एक इनको बोलता हूं कि आप कॉलेज कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, छोड़ दो, 1 साल सिर्फ यही करो। क्यों? क्योंकि यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस। यू विल हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स रीडिंग, सर्चिंग, डूइंग थिंग्स, प्रैक्टिकल्स, ये वो, तो आपको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए एक्चुअली दूसरा कोई चीज करने के लिए। तो लोग बोलते हैं नहीं हमारा ये है, हमारा कॉलेज का वो एग्जाम है, उसमें हम ये कर रहे हैं, ये तो 100% नहीं होने वाला है। I mean, they should actually leave that and do it full time, and definitely they have got a chance to have a very good career. Like Okay. you, I mean, people, I mean, they are having iconic figures like you, Pramod Chandorkar or Vijay Dayal, Mahesh Ambedkar, you know, I mean, all these big people, I mean, who you are doing so much of work. Eric Pille hai, kitne sare, I mean, all of you people, you are who are really doing things now. तो कुछ भी कर सकते, इसमें से बन सकते हैं, लेकिन बनने के लिए एवरीबडी कैन बी केजेस, यू नो, आई मीन आपने That would be disastrous, sir, if everybody was हाँ cages. आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आपको उतना हुनर होना चाहिए, आपको उतना लगन होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और आपके बच्चे को म्यूजिक और साउंड और रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग और उसमें इंटरेस्ट है तो उसको रियली सिखाओ। 1 साल में उसको बोलो, 1-1.5 साल उसको उसी में करने दो। आपको मालूम है, आपने कनाडा में जाके कोर्स किया हुआ है, मैंने एफटीआई में 3 साल गुजारे, उसके बाद में एपीआरएस का सरे यूनिवर्सिटी में कोर्स किया। सो यू नो लाइक हमने भी उतना इनपुट दिया, और उसके बाद में हमको इतने साल के बाद में आपने कितने साल काम किया पहले, जब आपको इतना कोई रिकग्निशन नहीं मिला, ये बाद में मिला जब आपने सही काम किया। अब ये लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप सीखो, अच्छी तरह से काम करो, और कोई भी इंडस्ट्री में आपको जो चांस मिलेगा उससे ज्यादा चांस ये इंडस्ट्री में मिलेगा 100%। Okay, so there is no shortcut according to you, मतलब कोई इसका shortcut नहीं है. You have to go through this path of practice and focus and do that. That's what you say. Avinash ji, another quick question being, when you were working in the studio, जब आप म्यूजिक रिकॉर्डिंग करते थे, did you ever bring your work home with you? मतलब जैसे मिक्स कर रहा हूँ तो मैं मिक्स घर ले आया सुनने के लिए कि घर पे कैसे सुनाई देगा, कुछ ऐसा करते हैं? 1-2 बार किया था, लेकिन वी वर नॉट अलाउड टू टेक। करियर में 1-2 बार किया था बस? क्योंकि हमारे वी वर नॉट सपोज टू कैरी एनीथिंग आउट ऑफ द स्टूडियो, यू नो, एनी फिजिकल थिंग, यू नो। ओके, बिकॉज इट्स अ कॉपीराइटेड थिंग, सो एक्चुअली वी वर नॉट। या अभी मैं बता सकता हूँ कि मैंने, क्योंकि कुछ होता है का मास्टरिंग किया था, तो मैं घर में आके सुना था वो, लेकिन you wanted to listen. Yeah, but actually never. I mean, this is also, I mean, like revelation to so many. I mean, even including Karan Johar, because nobody knew that, you know, I'm carrying. But all other tapes or all other things which are in the studio were never carried to home at all. Never. So how did you how do you, like, do you listen to music at home? Do you listen to it with the same passion of as if you are recording? Do you also listen to music at home and you kind of compare, make notes or things like that? Yeah, I definitely music from other people. It is all the time better to I mean, listen to things like that. But generally, you know, I was listening the Bollywood thing. You know, I am not a real Western kind of a person. So Bollywood मैं सुनता था. In fact, मतलब मुझे मालूम है कि कंदीसा जैसे हमने रिकॉर्ड किया, तो यू आर द
driving person, and we just followed what you are doing, actually. Kyunki, I was not having that kind of a mindset, to record that kind of sounds. So actually, that is the thing. Even the same thing happened when I was recording one album by Agni, those rock people. So rock movie, I was not really aware of how to get that kind of sound. But finally, I recorded. But ठीक है. But what I'm saying is कि जो चीज हम सुनेंगे, इवन आपने जो क्वेश्चन कहा कि घर में जाके सुनेंगे कि ये कैसा हुआ, वो हमारे लिए एक सिंपल चीज थी. हमारा जो मित्सुबिशी X86 रिकॉर्डर था, उसमें टेप रिकॉर्डर पे सुनने के लिए 2 छोटे स्पीकर थे, which were exactly like अपने घर में हम जो सुनते थे ना, वो 2-in-1 होता है वैसे. So if we listen on that and if we agree ये correct है, so that's it. Then it will sound correct everywhere. That was what we were doing. I still remember at some point the machine was not working, but you people were still using it as a pair of monitor speakers. Such a big expensive machine was only used for monitoring on those small speakers. Absolutely. Because they were like really representative speakers, home speakers, जो लोग general लोग सुनेंगे, like not high end, hi-fi end, but general public जो सुनेंगे. And if it sounds good there, then it sounds correct. So you had worked out that reference in your minds, everybody there, because from what I remember, Western Outdoor in terms of the control room was not an ideal control room. It was a rectangular room, very not very depth-wise, not much there. So it was not at all. Not at all. It was not a control room, you can say. But basically, what saved us was those 2 monitors, Genelec 1081A, and they were right for level-wise, volume-wise for that room, and we were almost listening. Near field. Everything in our lifetime. जो बाद में हमने बड़े-बड़े क्वेस्टेड मॉनिटर्स लगाए, उसके हम कभी ज्यादा सुनते भी नहीं थे. But what is your opinion on headphone mixes? Like people nowadays, since they don't have large rooms and they have small, they have issues. So people want to actually now mix on headphones. So what do you think about that, Avinash ji? In fact, मैं तो कह रहा हूँ कि आगे में हमने सब चीज हेडफोन पे ही मिक्स करनी चाहिए. Acha. Basically, why? Because almost every other sound is being heard by consumers on headphones only. Okay. Yeah, up to 90% or maybe 80% at least. और ये जो सिस्टम में और घर में बड़े इसमें सुनने हैं तो कोई है नहीं अभी आजकल. Nobody listens. So in fact, I insist कि हमने धीरे-धीरे हेडफोन पे ही सुनना चाहिए. तो that will be giving us a good idea. But उसके लिए एक अलग टाइप का हमने टेक्निक डेवलप करना चाहिए हर एक ने, जो हमने स्पीकर पे मिक्स करते थे. आजकल के बच्चे लोग तो सब हेडफोन पे ही मिक्स कर रहे हैं, उनको तो स्पीकर में मालूम ही नहीं है. सो गुड, in fact they should do it on that only. So just like we were in our time, we were compensating for cassette losses, so that means the medium on which the music was going to come dictated how we mixed. So we would actually increase the highs ki tape loss ke saath wo barabar aa jayega. So similarly, you're saying people should mix on headphones now. It's okay because a large part of the consumption of the music is happening on headphones. So that's what you're also suggesting. That's right. In fact, we have to mix on headphones, and we have to mix final copy after wave, always an MP3, and listen that MP3 on headphones, and then see how it translates. Then really do it, because MP3 is the thing what people are going to hear. Though वो मतलब बहुत गरीब है, लेकिन क्या करें, लोग तो वही सुनते. I have my own theory of reservations about MP3s, so we won't get into that. We don't have much time. Maybe that will be part of another topic altogether in terms of absolutely. We should. I would love to. Yes. Yeah. Okay, Avinash ji, we are at about 8 o'clock. I think we restarted, so we'll get maybe 10 minutes or 15 minutes grace time. I just wanted to quickly ask you a few things. It's not a rapid fire thing. There's no hamper at the end of it, unfortunately, like Karan Johar's coffee show. But just so for people to get to know a little bit more about you,
So I'm just going to ask you a few things like, so what is your favorite color, Avinash ji? Light blue. Light blue. I'm trying to think. You were, if you were wearing a lot of light blue t-shirt or shirts when you came to work. I liked the blue on the ISA 131. Focus right. That specific blue. Okay. That's a good reference. Relation, yeah. That's a good one. Or Avinash ji, you are from where? You are from Nagpur, I believe, or you are from Andhra Pradesh, or कहाँ से आप? No, Nagpur से. नागपुर से ही. तो what is your favorite dish? एक्चुअली नागपुर में जो एक बनता था उसको हम बोलते थे वड़ा भात. That is one of the, it was a really favorite of mine. And the second one is Puran Poli, of course. Puran Poli, of course. And by the way, I'm just sharing it again with everybody. Your wife makes some amazing Puran Poli. I've had it at your place. Amazing. I still remember it. Taste is still there. So nice of you, yeah. Yes, sir. Okay, sir, एक और चीज. Who would be your favorite artist? You might have recorded or not recorded, but who would be your favorite artist? Singer, instrumentalist, कोई आपका favorite है artist? Of course, the one who is not there now, Jagjit. Jagjit ji. He's because most importantly, he was the greatest of musician in any case, but he was greatest of a human being also. मैंने उनके ऐसा कोई देखा नहीं है जो हर अपने साथ काम करने वाले को भी उतना ही रिस्पेक्ट दे, इम्पोर्टेंस दे, उनकी तकलीफों में काम. He was a gem of a person. Gem भी नहीं, मैं तो he's like, that's why I like him. And of course recording him was like a, जिसको हम बोलते हैं ना स्वर्गीय आनंद, वैसा. No, I mean, there are so many stories regarding Jagjit Singh and Western Outdoor embedded in everybody's mind who has heard them. And of course, Western Outdoor की खासियत ये भी थी कि खाना बहुत कमाल का आता था आपके यहाँ, क्योंकि आसपास इतनी अच्छी जगहें थी जहाँ से खाना आ सकता था. एंड चंद्रू, thanks to Chandru, we could make sure that everybody was well fed and good was part of coming to Western Outdoor. और जगजीत जी का यही होता था कि सैटरडे पर्टिकुलरली आएंगे तो पहले करीबन 11:30 पौने 12 बजे आते थे. तो पहले जाके फोन पे बैठेंगे, घोड़ा लगाएंगे, घोड़े पे बेटिंग करेंगे. उसके बाद में चंदू बोले क्या खाने का यार, आज कार्य करो. उसके बाद में अभी टेप लगाओ. उसके बाद में लाइक इट वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन. अभी भी मैं उनका उनकी यादों से I get really disturbed. Emotional about it. Yeah, I'm sure you'll spend such a long time with him, all of you. Yes. और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ, इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे पास आते थे और इतने साल हम साथ में काम किए, लेकिन उनके साथ मेरा एक भी फोटोग्राफ नहीं. वो अच्छा. मैं कहीं सोचता हूँ कि मैं जगजीत जी के साथ इतना रिकॉर्डिंग किया, लेकिन उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई अभी कोई कैमरा है यार जगजीत के साथ मेरा फोटो निकालो, वैसे कोई हुआ नहीं यार. Actually, a lot of us get so involved with the work that we are doing that it's very difficult to think about that point of time to say कि मैं इनके साथ photo ले लूं. That doesn't, even when other people are taking photos, you are at that point helping them to take a photo with them, but you don't think about taking it with yourself. I can understand that. Definitely. मैं आपके यहाँ पे ये मीडियम से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के पास भी जगजीत जी का और मेरा फोटो दो. I want it to just. If anybody has, please have it sent to Avinash ji. I think it will be his cherished moment if anybody can do that. Sir, any of your favorite mix engineers, either here in India or abroad, whose work or mixes you like in terms of the fidelity or the sonic implant? आपको किसी के काम जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, किसी कोई नाम एक दो आते हैं आपके दिमाग में जिसका आप कभी सुना है, आपको बोला हो हाँ ये मजा. Actually, not straight off, because most importantly हमारे पर ना एक टाइप का मिक्सिंग का इतना ज्यादा असर था, इतना ज्यादा इफेक्ट था, वो था दमन जी के मिक्सेस एंड हाउ ही यूज्ड टू डू इट. सो एक्चुअली दूसरा कोई सुन के ये करना मुझे भी अभी तक
मतलब आई एम नॉट रियली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट सडनली से ऐसे कोई भी नाम फेंक सकते हैं हम बड़े बड़े उधर के हॉलीवुड के, बट आई डोंट नो टू डू फेंकने के लिए नहीं कर रहा था। बट यू नो here also I don't find that kind of thing. Maybe I can name you only that I've listened so many of your mixes and I like them immensely. अरे वाह, thank you sir, so nice of you. Okay sir, we'll move into one more section. हमने अनाउंस किया था सर कि आपसे जो भी प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, एंड उस क्वेश्चन में से अगर कोई आपको अच्छा लगेगा, so we have our gift sponsor Mr. Headphone Zone से Mr. Raghav, Yes. who has donated a J's 5 very nice balanced earphone with microphone built into it. So Great. I have a question which is from Mr. Rushik. उन्होंने बोला आपका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ हो टेप मशीन के साथ हैंडलिंग के टाइम, और आपने उसको कैसे, मतलब कहीं बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस हुआ हो, टेप कुछ गड़बड़ हो गया और आपने उसको कैसे हैंडल किया, एनीथिंग यू रिमेम्बर? एक्चुअली हैंडल किया तो नहीं, क्योंकि मैंने जैसे शायद आपको आई हैव गॉट दिस थिंग शेयर्ड विथ यू अर्लियर, जगजीत जी के साथ जो हुआ था, हमारा पूरा का पूरा गाना रेज हुआ था. So that was like a terrible thing, and never knew कि कैसे क्या किया जाए, and बहुत घबराए हुए थे हम, मैं और सुभाष की बताया कैसे जाए. और जगजीत जी को जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे किया, तो पहला उनका क्वेश्चन था कि तुमने क्या गाना इरेज किया, क्या किया उसने, कौन सा ट्रैक, क्या कोई रह गया कुछ? तो हमने बोला कुछ भी नहीं रह गया, पूरा का पूरा इरेज कर दिया. तो बोले बहुत अच्छा है यार, तुम लोग रिकॉर्ड भी अच्छा कर दो, इरेज भी बहुत अच्छा कर दो. सर क्या कर, ही वाज जोकिंग एंड he never mentioned about it at all any time to anybody. He re-recorded the whole song again? He never recorded. There were only 7 songs. That particular संवेदना करके उनकी जो एल्बम है, अपने अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं जो है, संवेदना करके उनका एल्बम है, 7 नहीं है उसमें. मैं उनको पूछा भी जगजीत जी इसमें तो साथ ही रहेंगे, तो क्या हो गया, मतलब मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ, मेरे साथ ही है इसमें. That 8 song is not there only. Not there. जो हमने रिलीज किया था, जो आपने रिलीज कर दिया. या और दूसरा एक बहुत ही एक भयंकर किस्सा हो गया था. वो था जब उत्तम जी थे, भूपी जी थे, दे वर रिकॉर्डिंग लाइव. जयंती जी बड़े बड़े म्यूजिशियन और लाइव बैठे ऐसे गजल रिकॉर्ड कर रहे थे. और उन्होंने पूरा का पूरा गजल रिकॉर्डिंग किया. मैं टेप पे था और उन्होंने बोला कि अरे ये इतना इतना एक लाइन भूपी जी का लेना है. तो इंस्टेड ऑफ शटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल अदर्स एंड रिकॉर्ड भूपी जी, मैंने उल्टा किया, record all track. And when it started, it dawned on everybody, including me, I've stopped here. So it was in that pause, you know, where, and on that pause they recorded the guitar का एक ये उत्तम जी ने बोले आजा फिर से चला गया, पहले उसको ठीक करते हैं. You know, it was such a terrible thing for me. I mean, I'm telling it first time on public media. I mean, Go and listen to it and see that guitar piece कहाँ पे है. Yeah, actually वो and it was just moment, you know, like जैसे किया वैसे मैं, धवन जी और इवन अंदर everybody क्यों क्या हुआ, उनका वॉइस आने लगा सिर्फ भूपी जी का, और बाकी सबके सब ट्रैक it was like मतलब कैसे किया मालूम नहीं, but it was a terrible thing. Okay, so Rashik, you have your reply. There is a Srijan Mitra who's asking you, sir, any particular moment or incident which made you realize that you're in love with music? कभी हुआ ऐसा moment कि आपको लगा suddenly, हाँ अब मेरे को म्यूजिक से प्रेम हो गया है, कुछ ऐसा? एक्चुअली वो क्लासिकल रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं, उसमें मुझे हुआ था एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग हम करते, हंसध्वनि करके रिकॉर्डिंग था, किशोरी आमोनकर का. और उसके पहले ही उन्होंने मुझे पूरा का पूरा हमारा डिस्कस हुआ था कि ये क्रोमेटिक स्केल जो है ये क्या होता है, वो से क्या होता है, ऐसे उसके बारे में उनका पूरा ये चल रहा था. एंड बाद में शी केम इनटू डिस्कशन अबाउट टेम्परिंग द स्केल, टेम्पर्ड स्केल एंड हमारा जो इंडियन, और उसमें मुझे ये पता चल गया कि उन्होंने जो बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है, और वो सिंपलिसिटी के लिए उन्होंने वो पूरे के पूरे ठोक के इधर उधर कर दिए सुर, तो आप वो गंदे सुर ही सुन रहे हो. सडनली रियलाइज ऐसे आज हम
सुनते हैं ये हंसध्वनि क्या कैसे गा रही है, नो लाइक, एंड इट वाज 74 मिनट्स ऑफ हंसध्वनि. एक्चुअली हंसध्वनि जस्ट छोटा राग है, इतना लंबा खींचना उसको मुश्किल है, लेकिन वो भाई ने गाया था. एंड यू नो आई रियली हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ दैट. एंड सेकंड एक्सपीरियंस वाज फ्लूट रिकॉर्डिंग इन इनसाइड खजुराहो टेम्पल के अंदर. आपने तो जो फ्लूट का हमने रिकॉर्डिंग किया चौरसिया साहब का, और रात में, और वो वाज कॉल्ड मलय मरुतम. You know, when I hear that, I mean, I heard that, you know, I really felt it, you know, music is, you know, something in, I mean, it really touches your, म्यूजिक के साथ वहाँ उस वो दो टाइम आत्मा, हुआ. वो आत्मा जो है वो छू जाती है. Okay, Avinash ji, we might get shut off at any point when Instagram decides 1 घंटा हो गया, वो शायद हो सकता है. But before that happens, I will thank you once again for taking the time out to be with us, and thank you everybody for being here. What we'll do is we'll continue some little bit more. Somebody's asked कि वेस्टर्न आर्वर के गोलाई, तबले की गोलाई की साउंड बहुत अच्छी होती थी, वो कैसे अचीव करते थे आप, इतना राउंड स्मूथ तबला आता था? Somebody's asked that question. So how did you achieve that? Actually, we used to record with Neumann microphones all the time, and it generally was having a bidirectional, you know, figure of 8, and the tablas were sitting on the ground, you know. Because if you take them up on any of the tables or chairs, you know, जैसे बहुत सारी इसमें एक रेजर बनाते हैं, I think that actually doesn't give that kind of, because you know the जो प्रेशर जोन है वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बनता है, और सबसे पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा फ्लोर, यू नो, फ्लोर और वॉल. सो वहां पे हम उनको ग्राउंड पे रखते हैं और एक अच्छे कंडेंसर माइक से रिकॉर्ड करते हैं. नहीं, देयर आर 2 तबलास और 2 देन वी मेक इट बाय डायरेक्शनल एंड नेवर पॉइंट इट डाउन ऑन बाया एंड दाया, यू नो, वी मेक इट लाइक front and record it. Even if I am doing cardioid mic or bidirectional, I put it not like, I mean, not tilt it, not angled from top, but you keep it in the front. Yeah, front. जैसे हम नेचुरल सुनते हैं, यू नो, तबला हम मतलब हम उसको ऐसा करके ऊपर से नहीं सुनते हैं ना, हम फ्रंट में सुनते हैं, तो जो वहाँ की जो फील आती है वो अपने को वैसी आती है, यू नो. दैट्स व्हाट बेसिकली द आइडिया. आई मीन दैट्स व्हाट व्हाई इट यूज्ड टू गिव दैट साउंड, आई सपोज. KM86 करके जो कंडेंस होता था वो, और वो भी हम उल्टा लगाते थे हमेशा. अच्छा. उसका भी एक कारण है, क्योंकि मैंने एक AES के एक जर्नल में देखा था कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग माइक लाइक दिस, व्हेन यू डू लाइक दिस, व्हाट हैपेंस, यू नो. आई मीन उसका एक एक्सप्लेनेशन है, मैं भी भूल रहा हूँ उसका एक्चुअल कारण, लेकिन इट ऑलवेज गिव्स अ बेटर साउंड व्हेन यू आर पुटिंग इट लाइक दैट, उल्टा. Okay, so I think if people who are hearing it would like to try it, and then maybe they can post samples of this and we can all get to hear and maybe send it to Avinash ji.